بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد मुबारक वसल्लम वसल्ली अलैहि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरूद ये वो अमल है कि फ़ौरन रब के दरबार में कबूल होता है. The durood of the Prophet is the action which immediately gets accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So everyone in one beautiful voice besides the durood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala ali sayyidina wa mawlana Muhammad mubarak wa sallim wa salli alayhi as-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. Inshallah, in the few moments which I have focusing on our English audience, inshallah, I'll be touching upon a few small points about the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala enable me to say the truth and you to enable you to hear the truth. Ameen ya Rabbal Alameen. We are gathered here to remember the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In particular, the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Imam Hussain radiyallahu anhu. That man who sacrificed his whole family and everything he had for the sake of the religion of his grandfather. He was given the chance to save himself, save his family by just giving his hand in the hand of Yazid. But that was playing with the religion of his grandfather, and that was destroying the religion of his grandfather. And Imam Hussain, he said, I can sacrifice my family, I can sacrifice my sons, I can sacrifice my daughters, but I cannot sacrifice the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, अपने बच्चों को कुर्बान कर सकता हूँ, खानदान को कुर्बान कर सकता हूँ, मगर नाने के दीन को मैं कुर्बान नहीं कर सकता. यजीद के हाथ पर मैं बैत नहीं कर सकता. आपके पास मौका था कि बैत कर लो और अपनी जान और घराने वाले की जान को बचा लो, मगर इमाम अली मकाम ने बता दिया कि जब नबी के दीन की बारी आती है, when it comes to the religion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो फिर सब कुछ बाद में आता है, नबी का दीन पहले आता है. Everything comes before, everything comes after. The religion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam comes before. It is the message of Imam Hussain from the land of Karbala. And the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why do we do the dhikr of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What is the need of remembering these people who died? What benefit is it give to us? हमें क्या फायदा मिलता है जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं? शुहदाए करबो बला का जब हम जिक्र करते हैं, हमें क्या फायदा मिलता है? What benefit do we get? Then listen to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, he says in the Bukhari Sharif, he says, Man ahabba ahl bayti, whoever loves my family, faqad ahabbani, then he has indeed loved me. And whoever loves me, he has indeed loved Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba Allahu adkhalahu al-jannah, and whoever loves Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will enter him into the gardens of paradise. जिसने मेरी अहल बैत के साथ मोहब्बत की, उसने फकत मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, उसने अल्लाह के साथ मोहब्बत की, और जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता कर देता है. मोहब्बत अल्लाह की है. It is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. The reward is the gardens of paradise. But the foundation of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, it is the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह की मोहब्बत इनाम जन्नत है, मगर अल्लाह की मोहब्बत की जो बुनियाद है वो अहले बैत की मोहब्बत है. अगर ये बुनियाद नहीं होगी तो ऊपर जो भी आप बिल्डिंग बनाए वो सब की सब तबाह हो जाएगी. If you don't have the foundation, which is the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then anything which you build up, whether that is the love of Rasulullah or the love of Allah subhanahu wa ta'ala, that is going to crumble down. Why? Because you do not have the foundation of your iman. The foundation of your iman is within the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And today here we are gathered to remember the personality
from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the second grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Imam Hassan. Imam Hassan, what a personality he is. क्या शान है हजरत इमाम अली मकाम की कि सामीन हजरात, वो हस्ती कि जिसने अपना सर कटा दिया, यजीदियों के सामने अपना सर कटा दिया, शहादत कबूल कर ली, मगर फिर भी शहीद होने के बाद भी आपका सर सबसे बुलंद था. The head was the highest amongst everyone, even after getting the head cut off from the body from the people of Yazid. और यजीदियों ने तो यही सोचा था कि हमने हुसैन को शहीद कर दिया. The Yazid is the army of Yazid. They thought we killed Hussein, we martyred Hussein. मगर हुसैन ने हमें बता दिया कि देखो, जब मैं जिंदा था तो फिर भी सबसे आला था, अब मैं इस दुनिया से चला गया, मैं शहीद हो चुका हूँ, मगर मेरा सिर सबसे आला फिर भी है. My head is still higher than everyone else. I was inside the world, I was still standing at the top. My head is off my body, is on top of this spear, yet my head is still standing above everyone else. ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना है. And that personality, that when your head is on top of the spear, the head is detached from the body. You have no connection between the body and the head. But look at Imam Hussein, he is on the spear, his head was on the spear, and he is reciting the Holy Quran. सर नेज़े की नोक पर है, मगर कुरान की तिलावत खत्म नहीं होती है. अरे ये फैज़ कहाँ से आया? Where did this faiz, where did this blessing come from? These blessings, they come from the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the father Sayyidina Ali al-Murtaza radiyallahu anhu. ये फैज़, ये अहले बैत का फैज़ है. ये नबी अलैहि सलाम से सैयदा ज़हरा का फैज़ और सैयदना अली al-Murtaza radiyallahu ta'ala anhu का फैज़ है. It is those blessings that this family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has. And no house in the world, there is no house like the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The love of the family of the Prophet is not part of our iman. Rather, it is the foundation of our iman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You want to save yourself from the problems of the world? Attach yourself onto my family. It is like the ark of Nuh alayhi salam. The ark of Nuh alayhi salam. Whoever goes on board, whoever attaches themselves to my family, they will be succeeded. They will be saved from the punishment of the world and the hereafter. And whoever detaches themselves from my family, whoever does not love my family, whoever does not care about my family," and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that that person shall be destroyed like the people who were destroyed in the flood of Nuh alayhi salam. जिस तरह नूह अलैहि सलाम के ज़माने में जो कश्ती के ऊपर नहीं आए थे वो तबाह हो गए थे, इसी तरह वो बंदे हैं जो मेरी अहले बैत के साथ, अहले बैत से दूर हो जाते हैं. तो हुजूर अलैहि सलाम ने हमें बता दिया कि अगर ईमान तुम्हें चाहिए, अगर कामयाबी दुनिया में चाहिए, तो जो सबसे पहला जो कदम है वो मोहब्बत अहले बैत है. It is the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today, it is very unfortunate. My last point, inshallah, and I will present our beautiful guests, inshallah. Today, we are very unfortunate that a high person like Imam Hussein, people are talking about him and saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was praying. Nabi alayhi salam नमाज में हैं, और कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं कि नबी को हुसैन का ख्याल आया नमाज के अंदर. हुसैन दुनिया है, नबी की नमाज टूट गई. People saying that the namaz of the Prophet broke because Hussein, it is dunya, he is part of the world, and the namaz of the Prophet sallallahu alaihi wasallam broke because the thought of Hussein came into head. याद रखें, इन जाहिलों को क्या पता कि हुसैन कौन है? What do these people know who Hussein is? अगर हमें पूछना है, अगर पता करना है कि हुसैन कौन है, तो अजमेर के ख्वाजा से पूछें. सैयदी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो वारिस हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सैयदा के नूरे नज़र, हज़रत अली के नूरे नज़र और जिगर के टुकड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो हस्ती कि जब हिंद की धरती पर आए थे तो अकेले थे, वाहिद थे, तन्हा थे, मगर जब आपका जनाजा उठा तो 90 लाख मुसलमान आपके साथ थे. When they came on the land of Hind, Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri, he was one, he was alone. But when his janazah, his funeral was lifted, 9 million Muslims were standing with him. Meaning 9 million Muslims, they accepted a hand upon a member of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आप क्या फरमाते हैं? आप कहते हैं कि तुम कहते हो कि हुसैन दुनिया है, उस नबी के ख्याल में हुसैन आया, नबी की नमाज टूट गई. आप फरमाते हैं याद रखो, हुसैन दुनिया नहीं, दीन अस्तो हुसैन, हुसैन दीन है. हुसैन is religion,
he is the embodiment of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. If Hussein was not there in Karbala, then whatever we have today, we would not have this. अगर हुसैन शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता. If Hussein did not get martyred, then in every single house we would have Yazid. But it is the sacrifices of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that we have everything today. You have this beautiful religion, thank the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Learn about the life, and the minimum that we can do is what you are doing today, alhamdulillah, coming and presenting your hazri in the blessed court. May Allah subhanahu wa ta'ala enable all of us to love the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, respect the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbul Izzat अहले बैत पाक की मोहब्बत दिलों में रखने की तौफीक अता फरमाए. कुरान खिताब आज के जो हमारे सनाहाने खुसूसी हैं